Jai Shri Krishna, Jai Sandhya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shiva Sari Gopala Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Jaya Jaya Prabhupada, Janavishmar Paramahati Bhagavad Ashokar Sriman Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada ki Durantara Srimad Bhagavatam ki Bhakti Vaishnavavrinda ki Jai Gaur-Nandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Are we starting from 20 or 21? 20. So today reading from Srimad Bhagavatam, 9th canto, 16th chapter, texts 20 to 23. 23. So we will repeat text 23 and text 20, 21, 22, I will just read them and then we'll repeat 23. Pitukaena sandaya shira adaya bharnishi sarva devamayam devam atmanam jayajanmake. Translation of Srila Bhagavatam. Thereafter, Parashurama joined his father's head to the dead body and placed the whole body and head upon Kushagram. By offering sacrifices, he began to worship Lord Vasudeva, who is the all-pervading supersoul of all the demigods and every living entity. ये श्लोक नंबर 20 का अनुवाद है। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर एवं सिर को पुष्पों के ऊपर रख दिया। वे यज्ञों के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे, जो समस्त देवताओं तथा हर जीव के सर्वव्यापी परमात्मा है। Text 21-22. Dapachim disham hotre bhamane dakshinam disham adbhajyape pratichimbae uddhatre utaram disham anibhyo bantara disha kasyapaya cham madhyata aryabhattam upadraste draste sadabhyebhyas param. Translation. यज्ञ समाप्ति पर परशुराम ने पूर्वी दिशा ब्रह्मा को, दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को,
पश्चिमी दिशा अर्धवर्णी को, उत्तरी दिशा प्रतिदाता को एवं चारों कोने उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम अन्य कोटियों को धारण करते थे। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को तथा आर्यवर्त को दर्शका को दे दिया। शेष भाग सदस्यों अर्थात संघ की टोलियों में बांट दिया। इसमें कहता है भारत में हिमालय पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य का भाग आर्यवर्त कहलाता है। Text number 23. Tascha vapita snana viduta shesha kilbisha saraswatyam mahanadyam veje bhabryat ivam shunami Tascha vapita snana Vidhuta shesha kilbisha Saraswatyam mahanadyam Rejevyabra ivashunam Tascha vapita snana Vidhuta shesha kilbisha Saraswatyam mahanadyam Vejipyabhra ivam shumam Adasya Saraswatyam mahanadyam Vejipyabhra Saraswatyam mahanadyam Thereafter, cha avapittasnana
बाद स्नान करके Viduta Avshesha Kilbicha Saraswatyam Mahanadhyam Rije Vyapra Eva Amshuman तत्पश्चात भगवान परशुराम ने यज्ञ अनुष्ठान पूरा करके अवभिन्न स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से दूर परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान उतर रहे हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस जगत में बांध देता है। कर्म बंधन से एक बार दूसरा अपना शरीर ग्रहण करते रहने का बोध होता है। यह जन्म का चक्र ही जीवन की सारी समस्या है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य भगवान विष्णु को तुष्ट करने के लिए यज्ञ करने का कर्म करे। यद्यपि परशुराम भगवान के था कि अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक होता रहे, कुछ न कुछ पाप कर्म करता ही है, भले ही वह पाप ना करना चाहता हो। उदाहरणार्थ, सड़क पर चलते हुए उसके पाँव के नीचे अनेक चींटियां तथा कीड़े घुसे जा सकते हैं और अनजाने ही अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। इसीलिए पंचतंत्र का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है। किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। यज्ञ संकीर्तन कार्य बहुत ही शून्य बचा। हम कृष्ण के प्रचंड अवतार भगवान चैतन्य की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण परम पुरुषार्थ कृष्ण, यद्यपि वे साक्षात कृष्ण हैं, किंतु वे सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन के द्वारा इस अवतार की पूजा करे। संकीर्तन के सम्मान करना मानव समाज के लिए विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञान या अज्ञान पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अगर हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण नाम स्वीकार करके हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। Om Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vichaitanyamanopistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadam Ahyam Tadati Swaparantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasarine Vishesha Shunyavadi Pastyatyarishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in the first verse that we read, we see the
potency of previous ages. तो लोग ने पहला से पढ़ा उसमें देख सकते हैं कि पूर्व काल की क्या ताकत कर सकती है That Parashuram was able to join the head and the body together. परशुराम भगवान ने एक सिर को शरीर से जोड़ सकते थे In modern times, we have this story of Frankenstein. आपकी आधुनिक जगत में जो है ये संभव नहीं है But not successful, just a story. ये सब एक कहानी के समान है ये कोई सच नहीं हो सकता So the point is, in previous times, in Vedic times, there were technologies which, with all the pride that people have in modern technology, is beyond anything that modern scientists can conceive of. तो उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी जो तकनीकें थे आज तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते और फिर आज तो कितने वैज्ञानिक होते हैं कि हम बहुत बड़े चीज कर लिया प्राप्त कर लिया They're very proud of their advancement, but their advancement is just actually to make money. तो आज के युग में लोग हैं बड़े गलती करते हैं बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं लेकिन केवल धन कमाने के लिए गलती कर रहे हैं It's like you buy the latest cell phone or latest computer because it has this new chip or it has so many more megabytes or gigabytes. तो आज का युग में बहुत आदमी कंप्यूटर में कर रहे हैं मोबाइल में कर रहे हैं चीज़ कर रहे हैं तो उसमें मेगाबाइट टेराबाइट इसमें आगे कर रहे हैं And in another 6 months, they'll have so many more gigabytes. They could have put all those gigabytes at one time, but they want you to buy a new product. तो आप लोगों को ये केवल मेगाबाइट टेराबाइट गीगाबाइट इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें और बढ़ते जा रहे हैं ये स्टोरेज बढ़ता जा रहा है So technology, modern technology, generally has the tendency, instead of making something better, making something worse. तो आज आधुनिक जो तकनीकें हैं वो कुछ बेहतर करने के लिए और जो है उसका जोड़ नहीं दे रहा है चीज हो जाता है It ends up increasing greed or making more weapons for destruction. तो आप लोगों को जैसे से आधुनिक तकनीकें और जो है घातक हथियारों का निर्माण हो गया है Just like Srila Prabhupada said, what is the use of their technology? They have accelerated killing by atomic bomb. Before you would kill one man, now you kill millions. That's their technology. ऐसे तकनीकें क्या फायदा इससे लाखों लोग एक बार मर जा रहे हैं इससे फायदा आपके का रास्ते में लाखों को मार जाने का नहीं बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं And by our technology of spreading the holy name, we bring life to millions of people. और ये हमारे लोग जो है हम प्रचार करके लाखों लोगों को वापस ला रहे हैं So Prabhupada said, which technology is better? So this is also Srila Prabhupada mentioned, Sanjaya, by his technology, he could see and hear what was going on in the battlefield and could even understand the feelings and sentiments of Arjuna, of Duryodhana. He could understand their mood. Now they have spy satellites, but they can't do all these things. And it costs so much money, to send one satellite up in the air. And Sanjaya's technology, or Arjuna's technology to counteract a brahmastra, that caused nothing. Just some water, you put water in the hand, sip it, and chant a mantra. So, anyway, so this is, and another thing in that first verse, it mentions that Lord Vasudeva is the all-pervading super soul of all the demigods and every living entity.
और पहले से बताया गया कि भगवान वासुदेव जो है वो सर्वव्यापी और सभी देवताओं के भगवान हैं। Otherwise indicating that the yajna that Parashuram is doing is for the benefit of every living entity. तो और बताया कि जो यज्ञ परशुराम कर रहे हैं सभी आत्माओं के भलाई के लिए कर रहे हैं। Nowadays people do yajna but for their own personal benefit. आजकल जो यज्ञ करते हैं वो केवल अपने उनके स्वयं के ही उपभोग के लिए करते हैं। And therefore in the verse that 23 in the purport, Srila Prabhupada began by quoting Bhagavad Gita, Yajna Tat Kamanon Yatra, that the yajna which is offered to Vishnu, that yajna, Tarakam Karma Panteya, that yajna brings you closer to the Supreme Personality of Godhead and liberates you. But the Lokoyam Karma Bandhanaha, but any sacrifice which is meant for sense gratification binds you to this material world. Therefore, Mukta Sangha Samachara. Therefore, things should be done properly. Because the purpose of yajna is to liberate you, not to bind you to this material world. And so Srila Prabhupada makes another important point, which is the summary of previous verses, that even Lord Parashuram had to suffer the reaction of his improper activity. He thought, because he killed his mother and his brothers on the order of his father, but that order of his father was not justified. It was not proper for someone of his stature, to Jamadagni, great saintly person, to kill someone because of just wasn't even an action, it was just impure thoughts. And he killed his sons just because they didn't obey him. Just so they didn't do what he said, and they killed them. Just like many years ago, I saw one comic book. I don't know how you think about it. I was in someone's house. I hadn't seen a comic book for about 40 years, or maybe 50 years. So I thought, what are they looking at nowadays? No. And on the last page, it had an advertisement for a lawyer. And this book is for, children 5, 6 years old. And it said, are your parents giving you a hard time? Are your parents giving you a hard time? If so, call this 800 number and I will defend you. So the wife and sons of Jamadagni needed this kind of lawyer. So Parashuram, he thought,
I have mystic power and my father has mystic power. So I'll kill them and then I'll ask him to bring them back to life. तो परशुराम ने सोचा कि मेरे पास योगी शक्तियां हैं और मेरे पिताजी का योगी शक्तियां हैं, मैं पहले मार दूंगा अपनी उस योगी शक्ति से पिताजी को अपना वापस जीवन शुरू कर देगा। But he should have used his Brahman tejas to convince his father not to do this. पर उनको लगा कि उनको अपने धर्म के जैसे उसको करना चाहिए, पिताजी को करने से ऐसा अधिकार मत कीजिए। Just like we have a duty to obey elders, but not to that degree, not to do something sinful. तो हमारा कर्तव्य है कि हम बड़ों का आदर मानें, कोई पाप करने के आगे नहीं करना चाहिए। And so, and also, he thought he could do it, but what if Jamadagni would not have done it? तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करना सकता था, लेकिन जब ने बात मानी उसका और Just like Arjuna, he thought that when the Brahmin whose 8 sons had died at childbirth in Dwarka, he thought he told when his wife again was pregnant, and he was complaining that this Ugrasena is a useless king. तो द्वारका में ऐसी बात हुई कि जब एक ब्राह्मण के 8 पुत्र जो है जल्दी नहीं मर गए थे, तो जब नौवीं बार उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने कहा कि उग्रसेन जो राजा है ये एक बहुत ही उनका कोई शक्ति नहीं है, ये बच्चों को बचा नहीं पाए। Just imagine how powerful kings were, that they could stop people, they could make sure that a father would not have to see his sons die. And they would also make sure that there was not too severe weather. No hurricanes, no tsunamis. How did they do this? How could they accomplish this? By yajna. They did yajna. And there they created an auspicious atmosphere. Imam parampara praptam imam vajarshayo. We do that. It's the duty of the king to preserve the parampara. Because through the parampara, the auspiciousness is created for all the citizens. So Arjuna said, no problem, I will protect you. I have a special weapon given by Lord Shiva. The residents of Vrindavan would never have made this mistake. When there was danger, they simply said, Krishna, Krishna. As Srila Prabhupada said in one class, he said, when there was devastating fire in Vrindavan, they did not call the fire brigade. Krishna, everything is contained in Krishna, even the fire brigade is contained in Krishna. But Arjuna thought, no, I have this weapon. And he was forgetting that his dear friend Krishna, he should have simply gone to him and said, please save Ugrasena. And not only did the son die, but he disappeared. No.
Arjuna was so embarrassed that he was ready to give up his body. तो अर्जुन को इतना खराब लग रहा था, वो बचा नहीं पा रहे थे, उनको लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। So a double foolishness. तो ये प्रकार से मूर्खता है। And of course, all this was done just so Mahavishnu could have a darshan of Krishna. ये सारी लीला हुई क्योंकि महाविष्णु भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। It's like if we want something, we make some arrangement. But when Mahavishnu wants something, it's a universal arrangement. जब हम चाहते हैं तो हम कुछ थोड़ा सा योजना करते हैं, जब महाविष्णु चाहते हैं तो बहुत बड़ी योजना करते हैं। So the point is that, as Srila Prabhupada says here, anyone who commits sinful activities, in the previous purports he says the same thing, one has to be very careful about what one does in this world. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमसे कोई भी तरह का पाप ना हो जाए। And Srila Prabhupada gives the example, very practical example, that when you're walking, you're committing sinful activity. When you're breathing, you're committing sinful activity. Therefore, the Jains, they wear a mask. But still, even you wear a mask and you do like Jad Bharat, you look at the ants and make sure you're not stepping on them. Still, you will kill some living entity. And one time Srila Prabhupada was driving in the car, and so they were, going at a fast speed, and the insects were being killed on the windshield. And he said, he looked at them and he said, therefore we must do everything for Krishna. Even if you're driving from point A to B, it should only be for serving Krishna. Otherwise, you will kill living entities. Therefore, Srila Prabhupada said that Maya is very rigid, her laws. And Krishna is very liberal. Krishna says that even if you commit sinful activities by force of nature, that you can, sarureva samantavya, you can be considered again a sadhu because you're serving Krishna and you're continuing to serve Krishna. And then Srila Prabhupada says, so in ancient times, the solution for this inadvertent killing was to do pancha yajna. So pancha yajna is very complex, very complicated. And in modern times, even if the Brahmins knew how to do it, the people could not afford it. Not something you do one time in your life. You have to do it continually. Panchayagya. Prabhupada said, even just for doing business, like ordinary business that people think this is authorized, but even ordinary business is cheating because you have to try to give something for more than gets more than what you gave. Actually, Prabhupada quoted in one lecture, but he didn't give the source. But he said
if you make more than 25% profit, you will meet Yamaraj. तो प्रबंध ने जगह पे कहा था कि अगर आप 25% ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो तो आप जो है ये सिद्धि का अचीव कर रहे हो. So for business people, make sure that anything over 25%, give it to Krishna. Yes, my business store more than 25% जो है अचीव है. And that way our temples and our Sankirtan movement will prosper like anything. लेकिन हमारे मंदिर में जो है एक बार पैसा करना पड़ता है. I've tried to find the source of that quote so I could, when we preach to wealthy people. So anything over 25%, you should give it to Krishna. Otherwise, you'll meet Yamaraj. तो आज हमारे अगर जो उसका सोच जाएगा तो ये लोगों को कहूँगा कि जो भी आप 25% का प्रॉफिट कमाते हैं वो हमें दे दीजिए. कृष्ण की सेवा करें. But at least those who have faith in Srila Prabhupada should understand, I have to do everything for Krishna. तो इसलिए जिनको प्रॉपर विश्वास है वो ये होना चाहिए कि हमें सब कुछ कृष्ण के लिए करना है. I always mention, you can't do business with Krishna. तो हम भगवान कृष्ण के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकते. He will always win. वो हमेशा वही जीतेंगे. And he says that yasyaham anurigami, that how do you say taddanam shanai, that even if you try to do it, he'll just take everything away. तो भगवान कहते हैं यस्याहम अंतर्यामी हरिश्चंद्र सुने कि अगर आप भगवान से छीन करने का प्रयास भी करोगे सब भगवान एकदम छीन लेंगे ये सकते हैं. So therefore Srila Prabhupada mentioned at the end of his purport that instead of Pancha Yajna, we should do Sankirtan Yajna. इसलिए भगवान ने तात्पर्य में कहते हैं कि हमें पंच यज्ञ के छोड़ करके हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए. इस युग में यही यज्ञ है. And he quotes the famous verse that Yajna Sankirtanapaya Yajanti Sumedhasaha, that but this requires intelligence. तो ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत फेमस कोट करते हैं कि आप यज्ञ संकीर्तन का यज्ञ सुमेधसाहा. And what kind of intelligence? तो किस प्रकार का यज्ञ है ये? Dhammi Buddhi Yogam Tam. That the kind of intelligence that Krishna gives you. तो सॉरी यहाँ बता रहे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही यज्ञ कर सकता है. तो किस प्रकार का बुद्धि? भगवान कहते हैं राम बुद्धि होगा, मैं बुद्धि दूंगा. Matashmitir Jnanam Upohanam Cha. He gives you the knowledge and memory and also forgetfulness. He gives these three things to everyone. तो भगवान कृष्ण सभी लोगों को तीन चीजें देते हैं. क्या? नॉलेज, ज्ञान, रिमेम्बरेंस, मतलब याद करने की ताकत और फॉरगेटफुलनेस, भूलने की शक्ति, वो भगवान से आती है. According to your desires, he will give you memory. तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको वो बुद्धि ज्ञान देते हैं. Whatever you're desiring, that is what you will remember. आप जो इच्छा करते हो वही आपको याद आएगा. And therefore Krishna says, Jayato Vishayan Punsam. Be very careful not to remember Vishaya. इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत सावधान रहिए कि आपको विषयों के बारे में चिंता न करें. Because whatever you remember, it will create attachment. तो आप जो भी चीज के बारे में ध्यान करोगे वो आप शासक हो जाओगे. And then based on that memory, Krishna will make you remember what you desire and forget what anything that will go against that desire. तो अगर आप वो सब याद करोगे तो आपको वही स्मरण होता रहेगा और आप भूल जाओगे वो चीजें जो आपको करता है. And therefore Srila Prabhupada said that if you want to be Krishna conscious, there are millions of reasons to do so. अगर आपको कृष्ण भक्त बनना है तो बहुत सारे प्रकार तरीके हैं जिससे आप कृष्ण भक्त बन सकते हो. And if you want to be in Maya, there's millions of reasons. He'll give you millions of reasons. He'll make you forget him, and he'll give you millions of reasons why to forget him. तो अगर आपको माया प्यार करना है किसको भूलना है तो भी हजारों आपको कारण है जिससे आप भूल सकते हो. This devotee treated me badly. ये भक्त मुझसे गलत व्यवहार किया. The leaders are all corrupt. तो जो सारी लीडर सब करप्ट है. Social media is the greatest contributor to destroying people's faith. तो सोशल मीडिया है वो आज के दिन में एक व्यक्ति के विश्वास को तोड़ने का सबसे बड़ा साधन है. Like anything, it can be used in Krishna's service. पर हर एक चीज भगवान की सेवा में लगा सकती है.
But even if you use it in Krishna service, yeah, people will come in contact with Krishna consciousness. तो अब भले आप कृष्ण conscious बना रहे लेकिन लोग कृष्ण conscious संपर्क में आते हैं. But then they will see Krishna consciousness on the equal platform of all the garbage that they find on social media. लेकिन मतलब कृष्ण भक्ति भी सोशल मीडिया पे है लेकिन साथ साथ बहुत सारे गार्बेज भी उसके अंदर भरे हैं. Because they'll be reading their Facebook or X or whatever, Twitter, and all of a sudden they come again, but so it looks like the same thing, तो जब वो सोशल मीडिया देखते हैं फेसबुक पे ट्विटर पे तो उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति के साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी दिखती हैं उनको. Somebody's mental diarrhea, तो किसी को अगर दिमागी की बीमारी है. So but anyway, that's another subject. So Srila Prabhupada said that Lord Chaitanya is recommending this. Why and how is he recommending it? Because he himself is doing it. तो प्रभु जी बताए चैतन्य महाप्रभु ने हमें रिकमेंड किया कि जो करे वो खुद ये काम कर रहे हैं हरे कृष्ण नाम का कीर्तन. This is a very important instruction that Srila Prabhupada is giving here in the purport. तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो प्रभु जी बताने दे रहे हैं. We can't just speak Krishna consciousness, we have to do it. तो हम खाली कृष्ण भक्ति वाले बोल नहीं सकते, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. We can't just advertise the Sankirtan Yajna, we have to participate in it. तो हम केवल संकीर्तन यज्ञ में हमारा बात ऐसे ले सकते हैं, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. Just like if you go and give a lecture about, yes, Sankirtan, everyone should do it, and then you go home and enjoy, then it will have no effect. So, because after this verse that Srila Prabhupada quotes in the Bhagavatam, it says, Jayam Sara Paribhavagnam Abhishkadoham. It says that this Sankirtan Yajna is an intense meditation on Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो प्रभु जी आगे बताते हैं कि ये जो संकीर्तन यज्ञ है ये बहुत ही गंभीर रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु पर ध्यान लगाने का प्रक्रिया है. And it's so powerful, this meditation, Sankirtan Yajna, otherwise chanting the holy name, is so powerful that it destroys all inauspicious things. And it awakens the real desire of the soul. And therefore, Tirthas Padam, the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, are the pilgrimage place for everyone's consciousness. With our legs, we may go to many pilgrimage places. But every day, when we're chanting the holy name, or if we're doing Sankirtan or Harinam or distributing prasadam, our consciousness should be situated at the feet of Chaitanya Mahaprabhu, begging his mercy that we will be successful. Shiva Vadimshi Nuttam Sharanyam. That even Shiva and Brahma, who give shelter to others, they take shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Lord Shiva has taken shelter in Chaitanya Mahaprabhu in the form of Advaita Acharya. And Brahma has taken shelter in Chaitanya Mahaprabhu in the form of Haridas Thakur. And this is why Advaita Acharya and Haridas Thakur were so powerful. Of course, Advaita Acharya is the Supreme Personality of Godhead. And he is the source of Shiva Shakti. And Haridas,
He is the incarnation. He is empowered by Lord Brahma. और हृदय शब्द है वो ब्रह्मा जी की शक्ति, ब्रह्मा के द्वारा शक्तिमान किए हैं। And then it says, Vidyarthi ham pranata phala, that if you just offer obeisance to Chaitanya Mahaprabhu, he will protect you. और बताते हैं कि अगर आप केवल प्रणाम करो चैतन्य महाप्रभु को, वो आपकी रक्षा करेंगे। Everyone who comes here and they just offer obeisances to Gaurnitai, they will, of course, they may not get, the same protection as a devotee who is chanting every day, but they will get protection. And that protection means that they will begin to understand Krishna consciousness. तो जो सामान्य लोग यहाँ पर आते हैं और कैसे प्रणाम करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं जो भक्तों को मिलता है कि वो हरि जप करते हैं, पर उनकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी ये प्रणाम करने से। Srila Prabhupada, when he explains that Yogakshemam Maham Yaham, that Krishna will give you everything you need and protect everything you have, this is what it refers to. तो प्रभु कहते हैं कि योगक्षेम महाम यहम, भगवान जो है आपके पास जो है उसको रक्षा करते हैं और जो नहीं है उसको देते हैं। That he gives you Krishna consciousness and he keeps you from going away from Krishna consciousness. If you're serious. अगर आप सिंसियर हैं तो भगवान जो है आपको कृष्ण भक्ति देते हैं, अगर आपका सही है और अगर आपका है उसको बचाते हैं ताकि आप पूर्ण चल पाए। And he gives shelter to all of his devotees. और वो अपने सभी भक्तों को आश्रय देते हैं। And also that Bhagavad Potam, his lotus feet are the boat that take us across the samsara to the spiritual world. और उनके चरण कमल है वो एक नाव के समान है जो हमें इस संसार की नदियों को पार करके भगवान को पहुंचाने में सक्षम है। And therefore, the Sri Chaitanya Mahaprabhu and his Sankirtan movement, as Srila Prabhupada says, are a special concession for human society because people are surrounded by sinful activity. तो चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है ये बहुत बड़ा उपकार है हमारा समाज पे, क्योंकि यहाँ हर जगह पर पाप का फैला हुआ है। Everywhere we go, even nowadays in India, everywhere you go, sinful activity is advertised. तो आज भारत में आप कहीं पर भी जाओ आपको ये पाप का वीडियो दिखते हैं। The ultimate definition of sinful activity is anything that is not Krishna conscious. तो जो सबसे उच्चतम जो एक व्याख्यान है पाप कर्म का वो ये है जो भी चीज जो कृष्ण भक्ति से जुड़ी नहीं है वो पाप है। Just like Parashuram is accepting his as sinful activity what he did, and even Haridas Thakur accepted as sinful activity what he did. तो परशुराम जी ने जो कार्य किया उसको भी पाप मान रहे हैं और हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि वो तो क्या वो पाप है बोला जैसा। After Haridas was tortured in 22 marketplaces, and then he voluntarily entered into the Ganga. हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मिला गया और वो अपनी स्वेच्छा से गंगा के अंदर चले गए। He floated down the Ganga to Pulia, and he came out, and all the Brahmins received him, and they said, "Oh Haridas, how could this injustice be done to you?" तो जब वो गंगा चले गए तो वो यहाँ गंगा पार करके तो गांव में आ गए, वहाँ से ब्राह्मण पूछा हरिदास तुम्हारे साथ इतना अन्याय कैसे हुआ? And they said that certainly this king, this Qazi, and this Nawab will be severely punished. तो उन्होंने कहा कि राजा काशी नवाब सबको बहुत प्रकार का पनिशमेंट दिया जाएगा तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार करने। And Haridas said, no, actually, this was just a token of what I deserve. और राजा का नहीं ये तो केवल छोटा सा पनिशमेंट दिया गया है, तो और इससे ज़्यादा दंड होना चाहिए। I heard blasphemy against the Supreme Lord, and I didn't do anything. तो हरिदास क्या बोलते हैं कि मैं इतना पापी हूँ कि मैंने भगवान की निंदा को सुना और मैंने वहाँ कुछ किया नहीं, इसलिए मैं पाप पर भागी हूँ। So Haridas is teaching us how serious we should take Krishna consciousness. तो हरिदास ठाकुर हमको सिखा रहे हैं कि कितना गंभीर होना चाहिए कृष्ण भक्ति में।
And if we even a little bit negligent in Krishna consciousness, one should think this is devastating. तो अगर थोड़ा सा भी हमसे अपराध है, negligence हो रही है, तो ये बहुत घातक माना चाहिए। Srila Prabhupada said, be very tolerant with others and be very strict with yourself. तो हम कहते हैं कि दूसरों के प्रति बहुत सहिष्णु रहिए और अपने प्रति जो है बहुत strict रहिए। But generally we do the opposite. लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं। We're very tolerant with ourselves and very strict with others. तो हम जो अपनी गलतियों को तो बहुत सह लेते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति बड़े strict रहते हैं। We, Kaliyuga means you get everything wrong. तो कलयुग में ये सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। So, therefore, Chaitanya Mahaprabhu, he introduced something that even became attractive to the demigod. Because it says that Kalim Sabha Jayantya Kunagya Sara Bhagina, that anyone who can understand the essence of this Yatra Sankirtane Naiva, who can understand the essence of this Sankirtan movement, will want to take birth in Kaliyuga. तो ऐसा बताया गया शास्त्र में कि कोई भी अगर इस संकीर्तन आंदोलन का महत्व को समझ जाएगा तो वो इस कलयुग में जन्म लेने का विलासी बन जाएगा। Of course, after the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, not before. लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाद पहले You don't want to be born like around the time of Buddha. That wouldn't help too much. You might get confused. तो हम लोग भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो शेरा में जाते थे, तो कुछ लगा। And because the demigods were thinking, we've been doing austerities for so many years, and we barely get the benefit. तो क्योंकि देवता सोच रहे थे कि हम इतने सालों तक तपस्या करते हैं, उसका क्या हमको फायदा मिला? Just like during the Leela of Gajendra, before when he was praying to the Lord, the demigods were laughing. तो आप देखो गजेंद्र व्याख्यान में जब वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो देवता लोग हंस रहे थे उसका। They were thinking, we've been praying to the Lord we pray every day, we've been praying for so many years, and we don't always get what we want. तो देवता लोग सोचते कि अरे हम लोग इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको नहीं मिलना चाहिए, इतना जल्दी प्रार्थना करके भगवान ने दिया, ऐसा सोच रहे देवता लोग। So this foolish elephant, he thinks by offering some prayers that something will happen. तो ये वो देवता लोग सोच रहे हैं कि ये बुद्ध खाने सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा प्रार्थना करूंगा और भगवान मुझे चलेंगे। But all of a sudden they saw a great effulgence, and they looked behind them, and Lord Vishnu was coming. Garuda. They thought we underestimated this elephant. No. So they followed Lord Vishnu, as if that was their plan. They wanted Lord Vishnu to see, yes, we're also praying for the welfare of Gajendra. But you can't fool Krishna. You can't make some show and think that Krishna will be impressed. And Srila Prabhupada said one time about the yogis, he said, Krishna is not looking for some gymnastic show. It's like we may go to the circus and see people doing all kinds of things. Just like if you go on pilgrimage in Vrindavan, and especially in Govardhan, nowadays, they always have this rope and a little girl with a stick walking on the rope. And people think, I see, there'll be a Sankirtan party and there'll be a few people, but there'll be this girl on the rope and there's more people.
तो भारत कह रहे हैं कि संकीर्तन पार्टी अधिक कम लोग होगी, लेकिन वहाँ पर द्वैत चरित्र शब्द का जवाब रहता है देखने के लिए उसको अच्छा हो। This shows the quality of consciousness in Kaliyuga. तो ये दिखाता है हमारे में क्या चल रहा है इस कलयुग में। It's like, especially in Latin America, in all the big parks, they have clowns that do juggling, and hundreds of people will come. तो भारत का लैटिन अमेरिका में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सड़क पे अलग-अलग तानाते दिखाते हैं और बहुत सारा जमावड़ा होता है लोगों को देखने। We go to Sankirtan, we'll get some people, but the clowns always have more people than we do. भारत में हम लोग संकीर्तन आते हैं तो हमारे साथ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन उनका बहुत भीड़ चलता है। So people who are attracted to clowns, they're fools. तो जो लोग इस प्रकार से आकर्षित होते हैं इससे एक प्रकार से मूर्ख लोग। A clown is a professional fool, and they are graduated fools. हमारा जो जोकर होता है क्लाउन वो एक प्रोफेशनल फूल है, मतलब अपने कार्य मूर्खता दिखा रहे हैं और ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। It's like one time Srila Prabhupada was giving a Pandal program in Delhi, and so he said, and everyone in Kaliyuga is fool and rascal. And one man objected, Swamiji, why you're calling us fools and rascals? And Prabhupada said, no, I did not say that. Krishna said it. I'm just repeating. So if you want, you can blame Krishna. No. Oh, shut up. No. So, but this is the essence of the Bhagavatam. Some people take objection to the Bhagavatam, it's too heavy. But it has to be. It must be. Because in the beginning it says, Paramo Nimatsaranam Satam. This Bhagavatam is for Paramahansas who are completely free from envy. Just right from the beginning, so you know what is the qualification to fully understand this Bhagavatam. Not just some little degree of material intelligence. No. I have a 140 IQ, therefore I can understand the Bhagavatam. Material intelligence will cause you to never understand the Bhagavatam. But as I mentioned, that real intelligence makes you surrender to Krishna. And how do we get that real intelligence? We get it by always hearing about Krishna and always and doing it, being united with Krishna, but with loving devotion. No, we cannot, can never understand Krishna with mundane intelligence. Just like Einstein, he was reading Bhagavad Gita regularly. He never surrendered to Krishna. No. Who can beat him as far as material intelligence? But that material intelligence could not understand. He actually came to the conclusion that God must be impersonal, not a person. तो आइंस्टाइन जो है वो भी इस डिस्कस करने के लिए कि भगवान जो है वो एक विशेष बात है या विशेष है, बट कोई व्यक्तिगत भगवान नहीं समझ पाता आइंस्टाइन। He said this when someone asked him, "What is your conception of God?"
He said, God is not a person. तो उन्होंने कहा कि से पूछा कि आप भगवान को किस रूप में जानते हैं? उन्होंने कहा भगवान व्यक्ति नहीं है, एक पर्सनल है। Obviously, he didn't have Bhagavad Gita as it is. पर ये सच नहीं कि उनके पास भगवान का ऐसे नहीं था। But because he was from Jewish background, he thought, how could God allow so many people to be killed? क्योंकि वो जूस बैकग्राउंड से थे, तो उनको ये समझ आता कि भगवान कैसे इतने लोगों की हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। But the fact is that God or Krishna is not killing anyone. बस सच्चाई है कि भगवान किसी को नहीं कर रहे हैं। We are killing ourselves. हम अपने आप को नहीं मार रहे हैं। If I'm supposed to be tortured and killed, it's because I tortured and killed someone. क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ झूठा हो रहा है, मैंने इस पर बात किया है, ये सच्चाई है। Just like Manduka Muni, you know, जैसे मंडूक मुनि की कथा आती है, he pierced an insect. तो वो जो है कुछ कीड़ों को सुई थी हो रही थी। He was a young boy, तो वो बालक थे। and Yamaraj chastised him. और यमराज ने उनको दंड दिया। Of course, Yamaraj had to take birth as Vidura because of that. लेकिन इसके फलस्वरूप यमराज को दंड देना पड़ा। But it was actually a blessing, because he participated in Krishna's pastime. लेकिन वो उनकी इच्छा थी कि जो कृष्ण के लावे आने चाहिए। Because Yamaraj, all the time, he's condemning people. क्योंकि यमराज जो है हमेशा उनको दो दंड देना पड़ता है। You go to this hill, you go to that hill, you suffer like this. तो कोई इस तरह का उधर का ये So he had a desire just to be with Krishna. तो उनकी इच्छा थी कि मैं कभी तो केवल कृष्ण का सानिध्य मिले। So therefore, Krishna fulfilled his desire. You come and participate in my pastime. तो इससे भगवान कृष्ण की इच्छा पूरी करी और उनको अपनी लीला में भाग लेने का मौका दिया। But he made the official arrangement by, doing cursing someone unfairly. तो लेकिन उन्होंने इसमें योजना बनाई, इसमें यमराज के द्वारा मंडूक मुनि को फालतू में उनको कर्ज दिला दिया। इसलिए Krishna never departs from the laws of nature. तो भगवान जो है कभी भी अपनी इच्छा पे नहीं जाते, पूरी करते हैं उसको। But he has a system by which we can become free from those laws of nature. तो उनका एक तरीका है जिसके द्वारा वो प्रकृति के संदर्भ से बाहर निकालने लाओ से बाहर निकालने। And that is the Sankirtan Yajna. यही संकीर्तन यज्ञ है जिसके द्वारा हम इस प्रकृति के ये माया जाल से बाहर निकल सकते हैं। So it's so easy to do, but it's very difficult to do. ये बहुत आसान है करना, बहुत मुश्किल है करना। It's like chutney, It's like chutney. चटनी जैसे Yeah. Too hot to eat and too sweet to resist. तो खाने में बहुत कुछ चलता है और देखने में भी चलता है। Because anyway, Krishna consciousness is easy because how much effort does it take to chant the holy name? But to chant it purely, how many people can do that? तो कृष्ण भक्ति इतना आसान है कि हरिनाम करने में क्या है, हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट है कि बहुत कम लोग ठीक से कर पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। So the way we do it is we follow the authorized representatives of Parampara and we wait patiently for Krishna's mercy, however it comes. तो हमें जो है परंपरा को फॉलो करना है और हम बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं जब कृष्ण की कृपा होगा। But generally we like this kind of mercy and not this kind of mercy. लेकिन हमें एक प्रकार का कृपा चाहिए, एक प्रकार का कृपा नहीं चाहिए। It's like someone brings by the Maha plate, I want the Rasgulla, तो कभी महाप्रसाद का कहना है तो हमें रसगुल्ला चाहिए। I don't want the rice, I want the Rasgulla. हमें चावल नहीं चाहिए, रसगुल्ला चाहिए। Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would take the Mahaprasad and mix it all and put salt, a handful of salt, mix it up. Hey, now you want Maha, you take it. तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी महाराज के हैं, तो सभी महापुरुष महाराज को खाना खा रहे थे और खाना। So the Maha that's coming from Krishna for all the living entities is their destiny. And if we surrender to Krishna, we accept whatever Krishna offers to us. तो ये जो महाप्रसाद या भगवान की कृपा है, वो सभी बातों की आ रही है, उनके अपने कर्मों के अनुसार
And then our life will be successful. So these are some thoughts on this verse. Any comment or question? Hare Krishna Maharaj. We are very thankful for these very insightful thoughts, ideas, and messages. I have 3 questions. One is pertaining to the 25% profit. So we said that the business people who are earning more than 25%, they can give the rest of part to be saved from the sin. So when the temple takes more than 25%, so you mean that since Krishna, we are earning for Krishna, there is no sin, or we also will be facing the sin? This is my first question. उनको कृष्ण सेवा में लगाना है। तो जो मंदिर इसको स्वीकार करते हैं वो क्या वो इसको कृष्ण सेवा में लगा पाते हैं तो नहीं लगा पाते तो इस दैट सिन या वो पाप है। ऐसा नहीं पूछा, मैंने ऐसे नहीं पूछा। मैंने ऐसे पूछा, अगर 20 उनको बोल रहे हम बाहर वाले को, अरे आप 25% ज्यादा कर रहे, तो इसलिए ज्यादा जो है कृष्ण को दे दीजिए ताकि पाप से बच सकते हो। लेकिन जब मंदिर में 25% ज्यादा लेते हैं कि आर वी एक्सक्यूज्ड बिकॉज वी आर टेकिंग फॉर कृष्ण? इज इट एप्लीकेबल टू आवर कॉन्टेक्स्ट, आर वी आल्सो fall in the path of sin? Extra profit, whatever, I will not take the name. कहीं भी वड़ा पाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। So are we also incurring sin for that? More than one topic? 25% of profit in our complex. Yeah. Govinda's gift store or whatever. Oh, Prabhupada said, but because we're doing it for Krishna, there's no problem. We can make 1,000%. Because we're using it for Krishna. And also business people, they can make it, but they should give it to Krishna. Of course, on the other hand, because we're devotees, we should be fair. Yes. We have to be careful that people don't think we're taking advantage of them. My second question is, despite rise in sinful activities in the modern society all over the world, but they are living longer, their lifespan is increasing, the food availability is increased, sense gratification is increased. How do we justify or understand this? Their sin is increasing, but their lifespan is increasing. Their food availability is increasing, and their sense gratifying opportunities are increasing. How do we understand this? Can you say it without the microphone? Because it doesn't resonate with the hearing devices. My point is that despite the sinful actions increasing, people's lifespan is increasing. People's lifespan, their life is increasing. Prior to independence of India, people used to live only 45 years average. Now it is 65 years. Now it is expected to go to 75 years. Sin is also increasing, and the lifespan is also increasing. The food availability earlier was less. Now there is a green revolution. More food is available. More and more food is available, despite. And the sense gratification opportunity is still increasing. More and more increasing. So how do you understand this?
In the Bhagavatam, 2nd canto, 3rd chapter, it says, what is the use of living a lifetime like the trees? So they may live more years, but there's less quality in the living. No, there's less quality of consciousness. But we may question, Bhagavatam says, Nangshat Yahur, that the lifespan will decrease. So why does that not happen? But this increase of lifespan is just to give faithless people more, more reason to be faithless. As I mentioned, as Srila Prabhupada said, that if you don't want to worship Krishna, Krishna will give you so many reasons not to do so. So it's our duty to tell people, now you've got 80 years instead of 50, so take advantage of it. Don't just waste the time like trees, or don't breathe like the billows, as the Bhagavatam says. That the billows on the fire, they're breathing more heavily than we are. But what is the use? और जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जब अग्नि में जैसे धुआं फेंकते हैं ना तो बेलोज बोलते हैं उसको मिश्रण आता है तो उस प्रकार सांस लेने से क्या फायदा है वो भी सांस ले रहा है हम भी सांस ले रहे हैं तो वैसा जीवन क्या फायदा है. So one devotee many years ago, Prabhupada was still on the planet, he went to Sri Lanka. He was in Sri Lanka doing service, starting a temple, and they had a big scientific gathering to choose who would get the Nobel Prize. तो एक बार प्रभाजी के समय में श्रीलंका गए थे वहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे ये चूज करने के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा. So some pious scientists, they knew him, so they said, why don't you come? Krishna, you can represent Krishna consciousness in the scientific conference. तो जो हमारे पास जो गए थे उनको भी बुलाया गया था कि आप भी एक प्रेजेंटेशन दीजिए कि कैसे कृष्ण कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक में प्रेजेंट किया जा सकता है. So they allowed him to speak. He was one of the first speakers, and he was thinking, what will I say? तो जब वो हमारे पास गए थे तो उन्होंने कहा उनको बोला कि आप भी कुछ बोलिए इस सभा में तो उसका मैं क्या बोलूं. So he remembered what Prabhupada said, and he said, so all of you great scientists, I just want to ask you, who can create an egg? Who can make an egg? You have so much technology, you have yellow substances and white substances, so who can make an egg? Has anyone done so? तो वो खड़े हो गए और बहुत सारे वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पूछा कि आप में से कौन है जो अंडा बना सकता है. वो क्रिएट एग और येलो व्हाइट सब्सटेंस बहुत सारा है आप में से कौन ऐसा व्यक्ति जो अंडा बना सकता है. Everyone said no, we can't do it. सबने कहा हम नहीं बना सकते कोई ताकत नहीं. So then he said, then I propose that we give the Nobel Prize to the chicken. No. So everyone, all the scientists, they all clapped. They said, yeah, makes sense.
So Krishna gives his devotees intelligence to utilize these things that make people faithless to give them more faith. Krishna gives us that intelligence. तो भगवान इस प्रकार का मंत्र भी देते हैं कि वो लोगों पे जो फेथलेस है उनका विश्वास बढ़ाने के लिए। My last question. Every day we do Sankirtan. So despite despite Sankirtan every day, dancing, still devotees are haunted by diseases, unhappiness, and not very sure of the future. Why is contradiction? प्रभु पूछ रहे हैं कि हर दिन हम संकीर्तन करते हैं गुलगुला बगला के लिए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि भक्तों में क्यों नाराजगी फैल रही है, क्यों वो अपने पुरुषों के लिए चिंतित रहते हैं, क्यों उनको बीमारियां आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? It means that they're not seeing Sankirtan in the right way. महाराज कह रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो संकीर्तन को सही तरीके से नहीं देख पा रहे। You're seeing it as I'm selling something, or I'm going out to chant for my own pleasure. तो वो जो संकीर्तन में जाते हैं तो उनका लगता है कि हम बेचने जा रहे हैं या जब तक हमें आनंद आएगा हम अपने ही आनंद ले जा रहे हैं। When we go out to do Hari Nam Sankirtan, we should have the mood of giving the holy name to others. Not, this is my time to enjoy dancing and chanting. तो जब हम जाते हैं हरिनाम पे तो हमारा मूड का लक्ष्य कि हम हरिनाम को बांट रहे दूसरों को दे रहे हैं, ना कि अभी ये मेरा समय आ गया अभी नाच के बना मजा करेंगे। And if I go out to distribute books, I should not think, let everyone see how many books I can distribute. No. जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं तो ये सोचना चाहिए ये पूरा दुनिया में दिखा दूंगा मैं कितना किताब बांट सकता हूँ। We should be praying to Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, please allow me to be your instrument and give this along with this book, give this person the desire to read it. तो हमें चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप को इंस्ट्रूमेंट बनाइए कि मैं आपकी कृपा का पात्र बनकर इस व्यक्ति तक पहुंचूं और इस व्यक्ति को ये किताब पढ़ने की इच्छा भी आप प्रदान कीजिए। The only reason we want to distribute so many books is because we're feeling that much compassion. No. तो एक ही कारण है कि हम बहुत सारे किताब पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारी दया की भावना आ रही है। As Prabhupada said, we see all these sinful activities around us, and it puts us in distress that people are suffering, and they think that suffering is happiness. तो बच कहते हैं कि हम जब देखते हैं लोग पाप करने लिप्त रहते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये देखो ये लोग कितना कष्ट पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कष्ट ही सुख है। Therefore, Krishna, let me be effective in distributing as many of these books as possible so that the volume of sinful activities will decrease. No. तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान मुझे आप कृपा करें कि हमारी किताब आगे ताकि ये लोग पढ़ करके अपने ये काम कार्य को रोकें और ये लोग भी सुखी बने। But if I'm thinking, let me distribute many books and everyone will glorify me and I can have more Mahaprasada. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना किताब बांटूंगा तो दुनिया मेरा गुणगान करेगा मेरे को सब मिलेगा, ये सही नहीं है। Or this Sankirtan is good business. I'll do this for the rest of my life and I can make a lot of money. अगर आप सोचे कि अरे ये तो बढ़िया है किताब बांटो पैसा कमाओ तो जीवन भर यही करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। One time a devotee came to Srila Prabhupada and he said, Prabhupada, I'm going to get married, so I would like to just do Sankirtan to maintain my family. तो एक बार लड़कियां बाबा जी मैं शादी करना चाहता हूं और मैं जो है ऐसा बिजनेस इस किताब को शुरू करूंगा। And Prabhupada said, no, you should work. तो नहीं आप बाहर काम करो। So after he left, his secretary asked, Prabhupada, why wouldn't it be better for him if he has to make money than he does by distributing books? तो उनके जाने के बाद सेक्रेटरी पूछा कि बाबा जी क्या सही नहीं होता कि वो बुक्स करके अपने परिवार को मेंटेन करे? And Prabhupada said, no, he wants to enjoy his senses. तो बोले नहीं ये अपने इंद्र तृप्ति करना चाहता है बुक किस में फॉल्ट है। So he should not do that by taking charity from others. वो दूसरों से दान लेकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। He should work. उसको बाहर काम करना चाहिए। If you distribute books, you should have Brahminical consciousness. अगर आप किताब बांटते हैं तो आपका चेतना शुद्ध होना चाहिए। This is an act of charity. I am giving
Krishna consciousness and they are giving a donation. तो ये जो है चैरिटी का काम है, हम कृष्ण भक्ति दे रहे हैं और उसको हमें कुछ दान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। Therefore, that donation should be used for Krishna consciousness. और वो जो डोनेशन आ रहा है वो भगवान के सेवा में लगना चाहिए। It's not a business. ये कोई बिजनेस नहीं है। It is a yajna. ये यज्ञ है। It's like sometimes people get Brahminical initiation and they start doing yajnas as business. तो कई बार जब लोग ब्राह्मण दीक्षा लेकर के यज्ञ का थोड़ा सा धंधा करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। But Srila Prabhupada, when he described the Brahmins, they would only keep a small amount for their maintenance, and everything else they would distribute. तो बाबा जी कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, केवल थोड़ा सा अमाउंट अपने मेंटेनेंस में रखते हैं, बाकी बांट देते हैं। Someone gives charity to the Brahmins with the faith that the Brahmins will use it properly. तो कोई ब्राह्मण को जब कोई दान देता है तो वो इस विश्वास से देता है कि ये इस धन का सही उपयोग करेगा। Therefore, we have to have that consciousness. If I'm taking charity, I have to use it properly. तो हमारे चिंता होना चाहिए कि हम उस दान को दे रहे हैं उसको अच्छे से भगवान की सेवा में लगाएं। Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Maharaj, you said like our desires, like sometimes we get tempting desires. So what we can do that Lord will do only, Lord will not give the tempting desires, He will do only the right desires. What we can do? Right desires. तो जी का प्रश्न है, कभी-कभी हमें इच्छा आती है जो बहुत उत्तेजना पूर्ण होती है, बहुत टेम्पटेशन आते हैं। ऐसा क्या करें जिससे हमारे मन में जो है सही प्रकार की इच्छाएं प्रकट करें? Hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Then we'll know how to cultivate the proper desires. महाराज कह रहे हैं कि भगवद गीता भागवत के रूप से पढ़िए, श्रवण कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इच्छा करना चाहिए भगवान से। When Arjuna asked Krishna, why is it that sometimes I do something even though I know I shouldn't do it? तो जैसे अर्जुना भगवान से पूछे कि कभी-कभी हम ऐसा कार्य करते हैं जो नहीं चाहते करना, लेकिन फिर भी बलपूर्वक कर बैठते हैं, ऐसा क्यों होता है? And Krishna answered your question. Kama esha, krodha esha, rajaguna samudbhavaha. If we act in the mode of passion, it will create unnecessary desires which will result in frustration and anger. तो भगवान कहते हैं कि अगर हम रजोगुण में काम करेंगे तो वो हमारे unnecessary desires को उत्पन्न करेंगे जो अल्टीमेटली हमें क्रोध लाएंगे और फ्रस्ट्रेशन लाएंगे। And Srila Prabhupada, actually one of the last things that Srila Prabhupada said before he left this world, he said, therefore I want varnashram. तो जो आखिरी चीज प्रभा जी बोलते हैं, one of the last thing जो बोलते हैं प्रभा जी शरीर छोड़ने से पहले कि this will bring people and society to sattva gun. क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से लोग सत्व में आएंगे। So even as devotees, if we remain in rajagun, then we will suffer. तो अगर भक्त होके भी हम रजोगुण में काम करेंगे तो हमें दंडी दुख मिलेगा। And these desires will continue to surface. और ऐसे प्रकार के टेम्पटेशन डिजायर्स हमारे मन में आते रहेंगे। Just scientific, right from the Gita, scientific. वो तो बहुत साइंटिफिक है। This is our science, not money-making technology. No. ये हमारा विज्ञान है, हमारा साइंस है, ये कोई धन कमाने की प्रक्रिया नहीं है। Or even worse, war-making technology. दुनिया में लोग जो है वो लोग युद्ध मचाने की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। Every country, especially all the big countries, every time I go on the internet, this country bought X amount of jet fighters. This country made this new supersonic rocket. This country, आजकल तो इंटरनेट में हर हमेशा यही न्यूज़ है, ये कंट्री ने इतना सुपरसोनिक जेट बना लिया, इतना फाइटर प्लेन बना, ये खाली युद्ध का ही सब चल रहा है। And the citizens suffer under the name of nationalism. और जो है जो आम जनता है वो नेशनलिज्म के नाम पर इसके अंदर बहुत सफरिंग होता है, लोग परेशानी झेलना पड़ता है। We need to take more money, and more people will go hungry, but we need this money to make new rockets. तो भले ही लोग भूखे मर रहे होंगे, लेकिन ये लोग पैसा देते हैं और रॉकेट बनाने के लिए। So it's just increasing. And Srila Prabhupada said, they have never made a weapon that they did not use. तो लोग कभी भी ऐसा वेपन बनाते हैं, लेकिन वो यूज नहीं करते उसका, वो बना के रखे हैं। So our weapon is Sangopangaska Parshadam. हमारा जो है संगो पंकास्त्र पार्षदम।
This is the weapon we use to stop those weapons from being used. तो ये हमारा ज्ञान है इस कलियुग। If we can make a greater weapon, Sangopangasta, then that weapon will counteract these weapons which would destroy the world 10 times over. तो अगर हम ऐसा बनाएंगे संकल्पांगास्त्र, तो ये जो वेपन है इनको रोक दिया जा सकता है। Therefore, Srila Prabhupada said again and again, the Sankirtan movement is the only hope for society. इसलिए बहुत बार कहते हैं कि संकीर्तन आंदोलन ही एकमात्र आशा है इस संसार की। Otherwise, Lord Shiva can rest because these people will just blow up the planet, and Lord Shiva doesn't have to destroy it. He can take some rest. So anyway, I think we have to stop now. It's getting late. So thank you all very much for your kind attention. Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Jai Gaura Premanandi.